So in the last class we had stopped at soundness and completeness. Now let us see that what does soundness and completeness mean actually. In logic and AI, soundness and completeness describe how good a proof system is at deriving conclusions from a knowledge base. That means these two properties are basically defining that how good our knowledge base, how good our proof system is. That means a good proof system should be both sound and complete. That we'll see later. Now let us recap these things. What entailment basically means. It is what is actually true in all the models, right? What is actually true in all the models. क्योंकि हम क्या देखते थे कि कोई चीज़ अगर इंटेल हो रहा है, दैट मीन्स जो what we used to say KB entails F when F is a subset of KB. We used to say this, or KB is a subset of F. Then we used to say that it is entail. That means KB is a subset of F. हम ऐसा बोलते थे entailment के लिए. Now for probability, लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी को भी लिखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी क्या था कि हम कोई भी इन्फरेंस से कोई नया फार्मूला डेराइव कर सकते हैं. सो व्हाट आवर प्रूफ रूल्स कैन डेराइव, ये इसमें बताता. तो साउंडनेस क्या है? सिस्टम इज साउंड इफ वॉट एवर यू डेराइव इज एक्चुअली ट्रू. दैट मीन्स वॉट एवर यू आर डेराइविंग इज बेसिकली लॉजिकली करेक्ट. तो ये क्या है? सिंटैक्टिक लाइन में हम लिख रहे हैं के बी डेराइव्स इफ, एंड देन अगर वो डेराइव कर रहा है दैट मीन्स इट शुड बी लॉजिकली करेक्ट. ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि वॉट एवर यू डिराइव, आप कोई भी अगर एक नया फार्मूला डिराइव करते हो यूजिंग सम इन्फरेंस रूल्स, तो इट इज़ एक्चुअली ट्रू. दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअली लॉजिकली करेक्ट इन द सिमेंटिक वर्ल्ड. ओके, सो दिस वाज अबाउट साउंडनेस. अब अगर हम इसका मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस देखें तो मैथमेटिकली अगर देखें फॉर्मूले से लिखने का, तो वो यही है कि इफ़ के बी इम्प्लॉइज एफ देन के बी इंटेल्स एफ. सो meaning is what? Meaning is if the proof system derives f, that means if the proof system, जो भी proof system हम लेके चल रहे हैं, proof system derives f, then what can we say? Then f must be logically correct. Then f must be logically correct in all models of KB, in all models of KB. Okay. Okay, so this was about soundness. Now coming to completeness. A system is complete. बस इसका रिवर्स हम लेंगे. जैसे पहले हमने लिया कि if KB derives F, then KB entails F, ये होना चाहिए. Here it will be if KB entails F, then KB derives F. That means a system is complete if everything that is logically true, हर कुछ जो logically true है can be proved formally. हम prove कर सकते हैं formally. तो ऐसे हम समझें कि इफ़ द प्रूफ सिस्टम डेराइव्स एफ, अगर मेरे प्रूफ सिस्टम ने कुछ डेराइव किया है, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दिस. इफ़ इट इज़ ट्रू इन ऑल द मॉडल्स ऑफ के बी, इफ़ एनी फार्मूला इज ट्रू इन ऑल द मॉडल्स ऑफ के बी, द प्रूफ सिस्टम विल बी एबल टू डेराइव इट. ठीक, ये हम बोल सकते हैं. और वी कैन से दैट जो हमने लिखा है कि के बी इफ़ के बी इंटेल्स एफ देन के बी डेराइव्स एफ. So if it is true in all the models of KB, then the proof system will be able to derive it. We can write it if it is, that means ये formula का बात कर रहे हैं, if it is true in all models of KB, then the proof system, then the proof system will be able to derive it, will be able to derive it. Now coming to the combined meaning. Combined meaning का मतलब क्या है कि एक ideal proof system should be
KB derives F by conditional KB entails F. ठीक है, दैट मीन्स these two are KB, इसका मतलब क्या है बाई कंडीशनल का? इट मीन्स दैट if KB derives F then it implies that KB entails F, and if KB entails F then it implies that KB derives F. Okay, that means it proves only truth and proves all the truth. Now see, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो we can see a real world analogy. एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखते हैं. So let us take the example of a judge. ठीक है, let us take the example of a judge, and here we will understand what soundness and completeness means. तो a judge can be said to be sound. देखो ऐसे it doesn't make any sense to call a judge as sound, but just for understanding sake, if he never convicts an innocent person, and we can call him complete if he never lets a guilty person go free. Never lets a guilty person go free. So who will be the best judge? Best judge will be the combination of both of them. ठीक है, अगर हम दोनों को combine करें तो it will be the best judge. That means no innocent is punished, and no guilty escaped. Okay, so now see, never lets a guilty person go free. That means इसका क्या मतलब है? अगर कोई चीज़, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो what it was written completeness में, KB entails F, then KB can be proved. So never lets a guilty person go free. That means if a person is guilty, then he cannot be let go free. Okay, so it is like if KB entails F, then KB derives F. That means if a person is guilty, he is going to be punished, right? Okay, so this was everything regarding soundness and completeness. Now what we will see कि the modus ponens that we saw, जो हमने modus ponens का देखा था, तो we need to prove that whether modus ponens is sound and complete. ये प्रूव करना है हमें क्या modus ponens sound है और complete है. ठीक है, so this we will do in the upcoming video.